Good evening to all the students. We are back again in the LVC for financial management. We had already started with the chapter of management of working capital. Under management of working capital, we had covered many concepts. We had understood many concepts, be it how to estimate the working capital, be it how to finance the working capital, be it the concept of operating cycle, how to calculate the duration of operating cycle, etc. etc. In our previous session, we started with receivables management. ठीक है, उसमें हमने ये समझा कि सिर्फ सेल करना is not the only thing in the business. Timely collection of receipts from the customers is equally important. Are you getting this? फिर हमने ये भी देखा कि what should be the optimum credit policy that company should grant to its customers. 20 days, 40 days, 60 days, 80 days, कितना. So in that we understood, for that we need to calculate net benefit. How to calculate net benefit? It was nothing but gross benefit less all the cost and risk associated with क्रेडिट सेल्स. ठीक है, और जिस पॉलिसी में नेट बेनिफिट सबसे मैक्सिमम, वी विल सिलेक्ट दैट पॉलिसी. अंडरस्टूड? ये देखा था. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विथ फैक्टरिंग. यस और नो? फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, फैक्टरिंग अग्रीमेंट क्या होती है, व्हाट इज रिकोर्स फैक्टरिंग, व्हाट इज नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग. वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बट हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे फैक्टरिंग पे. सो इन टुडेज सेशन वी विल स्टार्ट विथ a problem on factoring. That problem would be comprehensive, जिसमें factoring will provide collection of service, collection की सर्विस भी, एंड दे विल ग्रांट अस द एडवांस एज. ठीक है, सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. And let's see how to solve problem on factoring. Today's session we need to cover many concepts. After factoring we will be understanding cash and treasury management. उसके बाद हमें payables management भी complete करना है. So today's session has to cover many concepts, and today is the last session for this chapter. Okay, illustration number 15. Okay, before starting problem on factoring, I already informed during the previous session that factoring का कोई भी question आएगा ना, in that question our debtors will be valued on sales. ठीक है, as per the ICAI approach. So remember students, जब factoring का कोई भी question आए, don't value the debtors on cost, बल्कि value the debtors on sales. अंडरस्टूड? एंड इसमें हमें क्या एनालिसिस करना है? एनालिसिस इतना ही करना है कि वेदर द कंपनी शुड कंटिन्यू विद इन हाउस कलेक्शन प्रोसेस और वेदर द कंपनी शुड हायर फैक्टर एंड अवेल हिज फैक्टरिंग सर्विस. इसका कंपैरिजन, इसका एनालिसिस करना है, एंड जिसमें फायदा ज्यादा वी विल सिलेक्ट दैट. सो एवरीवन कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 15. of the module. Page number is 9.85. A factoring firm has a credit sales of 360 lakhs and its average collection period is 30 days. The financial controller estimates bad debts losses are around 2% of credit sales. The firm spends 1,40,000 annually on debtors administration.
This administration cost comprises of telephonic and fax bills along with salaries of staff members. These are the variable cost. Hey, in short, can I say from this point till this cost, इन हाउस हमारी जो अभी फिलहाल की प्रोसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है? यस और नो? दिस इज द इंफॉर्मेशन or the cost of existing scenario if company continues with in-house collection. Yes or no? ये करंट की स्थिति, अभी तो हम फैक्टरिंग के पास नहीं गए हैं. अभी लेट्स अज्यूम कि हम खुद से ही हमारा कलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं. तो व्हाट आर द कॉस्ट, बैड डेट्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है, तो ये सब है. ठीक है. नाउ द फैक्टरिंग फर्म has offered to buy the firm's receivable. The factor will charge 1% commission. So can I say factoring commission is 1% and it is always on sales? ठीक है. अच्छा, not just the collection process. It will also pay an advance at an interest of 15%. Means are you getting कि हमारा जो डेटर्स में पैसा ब्लॉक होगा उसकी फंडिंग भी मुझे फैक्टर करके दे रहा है. Are you getting this? But not the 100% amount after withholding 10% as a reserve. Analyze what the firm should do. It means they are asking you whether the firm should continue with existing in-house collection process कि फैक्टरिंग के पास जाके फैक्टरिंग को सौंप दे कलेक्शन सर्विस, और फैक्टरिंग से एडवांस ले, बोलो फायदा किसमें है. दिस वी हैव टू एनालाइज. Understood the question? Assume 360 days in a year. Everyone understood? Question समझ में आया क्या करना है? Now how to proceed with the question, how the solution will look, I will explain you just within few seconds. ठीक है. पहले क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन में इतना ही एनालाइज करना है, कंपनी को क्या करना चाहिए, फैक्टरिंग की सर्विस अवेल करनी चाहिए या कंटिन्यू विद इन हाउस करना चाहिए. Understood everyone? And यहाँ पे collection period is 30 days. Okay. So let's analyze. Again, our format will remain same. Huh? Format will remain same. Sales less variable cost less fixed cost, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एबीसीडी. अब एबीसीडी के साथ फैक्टरिंग वाले सर्विस कॉलम में इफ वी अवेल द फैक्टरिंग सर्विस, कैन आई से फैक्टरिंग कमीशन एक और कॉस्ट ऐड हो जाएगा, एंड इंटरेस्ट ऑन एडवांस एक और कॉस्ट ऐड हो जाएगा. यस और नो? So that will also be added in cost only in the factoring column. So again, let's start with sales. Sales. Current level of sales is 360 lakhs. ए फैक्टरिंग के पास जाने से क्या मेरा सेल्स बढ़ेगा कि दे आर जस्ट द प्रोवाइडर ऑफ कलेक्शन सर्विस? वो क्या मुझे सेल्स, आर दे आर मार्केटिंग पर्सन, वो मेरा सेल्स बढ़ा के देंगे कि डेटर से कलेक्शन की सर्विस करके देंगे? अंडरस्टूड? सो दे आर जस्ट द सर्विस प्रोवाइडर, दे आर नॉट द मार्केटिंग पर्सन. तो फैक्टरिंग के कॉलम में मेरा सेल्स नहीं बढ़ जाएगा, सेल्स विल रिमेन सेम. आर यू फॉलोइंग स्टूडेंट्स? एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 days. एंड इन फैक्टरिंग सर्विस, सी कभी कभार क्या होता है, इफ वी हायर अ प्रोफेशनल फॉर कलेक्शन सर्विस, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा एग्जिस्टिंग से कम हो जाता है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ यू आर हायरिंग अ प्रोफेशनल जिसका काम ही कलेक्शन करना है, कहना है उसका काम ये भी है कि जो पहले 30 दिन में पैसे आ रहे थे वो 30 दिन से पहले पहले आ जाए, जल्दी आ जाए. Are you getting this? So ideally question will provide what is the ACP if factoring services are available. Are you following? But इस question में specifically in illustration 15 they haven't provided what is the ACP if factoring service is available. So can I say existing will continue?
Are you following, students? In absence of information, factor भी 30 days टाइम लेगा ऑन एन एवरेज टू कलेक्ट फ्रॉम द रिसीवेबल्स. ठीक है, आइडियली ये 30 से कम होना चाहिए, 25, 20, because we are hiring, we are availing the service of professional. So ideally he should recover the money quick than what, than the speed at which we are recovering. Are you following? But currently in this question, no specific ACP details is given for factoring service. We will assume that current ACP will continue. ठीक है, इन हाउस में सेल्स इज 360 lakhs, फैक्टरिंग सर्विस अवेल करेंगे तो भी 360 लाख ही रहेगा, सेल्स विल नॉट इंक्रीज. आर यू फॉलोइंग, स्टूडेंट्स? ए वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, any information given in the question about variable cost, fixed cost? That is, does question provide any information on cost of sales? How is it possible to reduce credit period? अरे by reducing credit period means उनको थोड़ा डिस्काउंटिंग की लालच देंगे कि आप जल्दी पेमेंट करो, we will give you some discount. इस बार आप जल्दी पेमेंट करो, नेक्स्ट परचेज में, नेक्स्ट आपके परचेज में we will give you some trade discount. So this is how we can just give them some lollipops, incentives to make the payment early. So ये सब काम हमारा नहीं है, हमने तो फैक्टर को दे दिया ये सर्विस, अब ये उनका लुकआउट है, how they are getting the money fast. Sales will not fall if you are giving discount, trade discount. If you are giving better deal, how will the sales fall? If you are giving better deals, better offers than your competitors, then how will the sales fall? ठीक है, so no information. My point over here currently was, does question provide any information on variable and fixed cost? So not that. So can I say यही sales मेरा operating बन जाएगा, operating profit बन जाएगा? Yes or no? Because of no information as far as variable and fixed cost is concerned. ठीक है, अब हम माइनस करते हैं ABCD. तो ए में एडमिन कॉस्ट है. If we do in-house collection, can I say my company has to incur 1,40,000 of administration cost, of debtors administration cost? अगर हम फैक्टर की सर्विस अवेल करते हैं तो क्या ये कॉस्ट मुझे अब बेयर करना पड़ेगा? Is it my headache now? Are you getting this? This headache of debtors administration is taken by factoring. Are you getting this? All the telephonic fax cost is now taken by factoring. So if I'm availing factoring service, I don't need to pay any admin cost. Work factor का lookout है. But if I do in-house collection, can I say I have to bear 1.4 lakh of admin cost? Are you getting this? Understood till here, students? Next, bad debts. If I continue with in-house collection process, so due to my inefficiency, bad debts losses would be around 2% of credit sales. So can I say bad debts over here would be 360 lakh ka 2%? Yes or no? Can I say 7.2 lakhs? अच्छा, if I avail factor की service, does the company need to bear the bad debts cost? क्या ये कंपनी का हेडेक होगा कि फैक्टर का होगा? बोलो, what do you think? What is your opinion? If I avail factoring service, ये bad debts का headache और any bad debts loss is company's lookout कि factor का lookout? Sir, it depends on the type of factoring. ऐसे आप नहीं बोल सकते. It depends on type of factoring. Can I say अगर non-recourse factoring हुआ, then factor will avail. But if the type of factoring is recourse, that means can I say this bad debts loss company has to bear? Yes or no? But again, see whether the
question has specified what type of factoring it is? Recourse, non-recourse, ऐसा कुछ specify किया हुआ है question में? There is no such specific information on the type of factoring in illustration 15. So as a standard industry practice, I told you it is always assumed to be non-recourse. Are you getting this? And non-recourse matlab factor will bear the bad debts cost. Are you getting this? So ye nuksan, if I am availing the factoring service, I don't have to bear any bad debts cost. Okay? There is no information on collection cost. There is no information on discounting cost. Okay? No information on discounting cost as well. But can I say there is information on factoring commission? Yes or no? Agar if I continue with in-house collection process, if I continue with in-house collection process, so I don't need to pay any factoring commission. But if I avail factoring service, can I say 360 lakh is my total credit sales? Means I have to recover 360 lakh from debtors. Correct? Credit sales. So uska 1% I need to pay. Are you getting it? So kitna aega? Can I say 3.6 lakh will be my factoring commission? Understood? Next, interest on advance granted by the factor. Interest on advance granted by the factor. Acha, if I'm availing advances, advances means I am taking a short-term loan from factor. तो क्या वो इन हाउस कलेक्शन प्रोसेस में आता क्या? उसमें कुछ नहीं आता, उसमें सिर्फ COCD आता. Are you following? Under in-house collection, I'm not availing factoring. I'm not availing any factoring service. Factoring service ही avail नहीं कर रहा हूँ, तो मैं advance क्या लूंगा उससे? Are you following? So interest on advance will not come under in-house collection के column में, but it will definitely come if we are availing factoring service and factoring is providing two services, collection plus advance granting. Are you following? इस क्वेश्चन में it is providing two service ना, one is collection and one is paying us an advance at interest of 15%. तो दोनों सर्विस फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस आएगा, एंड इंटरेस्ट ऑन एडवांस वी विल कैलकुलेट यूजिंग वर्किंग नोट 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके भी सिंपल स्टेप्स है, यू जस्ट फॉलो द स्टेप्स अंडर द वर्किंग नोट एंड गेट दिस अमाउंट. फॉलोइंग स्टूडेंट्स, last but not the least, if we go with in-house collection process, can I say COCD आता, cost of carrying debtors आता? Because under in-house collection process, any amount that is blocked in the debtors will be funded by whom? हमें ढूंढना है. Yes or no? Either we will fund by our own funds or we will look with some bank for borrowing. Are you getting this, students? But यहाँ पे कहीं पे भी COCD रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसा कोई रेट दिया है स्टूडेंट्स? फॉर COCD एनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसी कोई रेट बोली है? नो. सो यू हैव टू ऑप्शंस ओवर हियर. You can assume two things. One is you can ignore the COCD. हम नोट लिख देंगे कि since COCD rate, ROI rate, opportunity cost rate is not given in the question, we will ignore the COCD. This is assumption number 1. Assumption number 2, we will borrow the fund that we need from the bank, from the third party bank, not from this factoring firm, but from the bank. तो सर अगर हम बैंक से बोरो करेंगे तो ऑब्वियसली हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इन दैट केस सर इंटरेस्ट रेट वो बैंक का कितना होगा? Hey, are you understanding the flow what I'm trying to say? For COCD, under in-house collection, we have two options. One is either we will fund from our own sources,
अगर ओन सोर्सेज से फंड कर रहे हो तो उसके लिए आरओआई रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट चाहिए, करेक्ट, बट वो तो क्वेश्चन में दिया नहीं है. सो नाउ व्हाट टू डू, वी आर स्टक ओवर हियर. तो assumption number 1 says ignore COCD completely in absence of information of COCD rate. Option 2, don't invest from your own funds but take borrowing from other bank, from other financial institution. हो तो हम अदर इन्फॉर बैंक के पास जाएंगे, भाई मुझे पैसा दे, आई नीड, माई अमाउंट इज ब्लॉक्ड इन द डेटर्स. तो बैंक विल चार्ज सम इंटरेस्ट, तो उस बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हमें लेना है, यस और नो, बट वो रेट भी नहीं है. सो इन दैट केस वी कैन अज्यूम जो फैक्टरिंग रेट, फैक्टरिंग हमसे चार्ज कर रहा है ना 15%, वही मार्केट का इंटरेस्ट रेट है करंटली. सो द अदर बैंक विल ऑल्सो चार्ज 15% फ्रॉम अस. सो दिस इज assumption number 2. Understood? So any method is correct. Yeah, bank interest not given. So we will assume जो ये 15% interest है ना, that is the market interest rate. Are you following? So sub bank, sub financial institution, factoring firm are charging 15% on any loan granted. This is assumption number 2. In the solution, currently you will see that they have assumed COCD to be nil. They have assumed in absence of COCD rate, ignore. This is what solution says. But logically, technically, you can also assume कि in-house collection process में हमें जो funding चाहिए for the amount blocked in the debtors, we will get that funding from other bank, other financial institution at 15% rate. ठीक है? I hope everyone followed this. So now our only task, currently I am following the institution solution, that is the solution given in the module. They've ignored COCD. So now our only task over here is to find this amount, interest on advances. Okay? So how to calculate interest on advances granted by factor? तो उसके लिए हम working note 1 बनाएंगे. Just follow this simple process and you will get your answer. Calculation of interest on advances granted by factor. ठीक है, तो सबसे पहले हाउ मच इज द अमाउंट ब्लॉक्ड इन द डेटर्स, ये हमें फंडिंग कितना चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स. तो कैन आई से स्टेप 1 इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेटर्स, yes or no, and here debtors will be valued on sales. On sales means credit sales. I already gave you an important note on this. ठीक है, so can I say to calculate the value of debtors, credit sales into ACP, which is 30 days, and we have to assume 360 days in a year. So amount blocked in the debtors would be 30, 360, can I say 30 lakhs? Yes or no? So this is the amount that I need from the factor. ठीक है, so just visualize, I need 30 lakh of funds. So I am going to the factor. See, now we are under this, under column 2, we are calculating interest on advances. तो अब आप फैक्टर की सर्विस अवेल कर रहे हो, जस्ट विजुअलाइज दैट. ठीक है, सो आई एम सेइंग टू द फैक्टर, हे फैक्टर, आई नीड फंडिंग ऑफ 30 lakhs. फैक्टर इज सेइंग सर मिल जाएगा ना. फैक्टर सेज बट सर पूरा 30 लाख नहीं, आई विल फर्स्ट कीप और सबट्रैक्ट 10% रिजर्व, आई विल विदहोल्ड. विदहोल्ड मींस जैसे टैक्स विदहोल्डिंग होता है TDS, वैसे एडवांस विदहोल्ड होगा 10% का. आर यू फॉलोइंग, एज अ रिजर्व. ठीक है, सो आई विल फर्स्ट सबट्रैक्ट दैट फैक्टरिंग रिजर्व एट 10%, 3 lakh. ठीक है, सो दिस इज ग्रॉस अमाउंट अवेलेबल एज एन एडवांस 27 लाख. सो मैंने फैक्टर को बोला ठीक है मुझे 27 लाख का फंडिंग कर दे. बट अगेन फैक्टरिंग इज सेस कि सर हमारे बिजनेस में, फैक्टरिंग के बिजनेस में जो फैक्टरिंग कमीशन होता है ना ऑन दिस 30 लाख ऑफ 1%,
सी आई एम ग्रांटिंग यू एडवांस ऑफ 30 लाख, करेक्ट? उस पे जो कमीशन हमारा बनता है ना, वी सब्ट्रैक्ट दैट, हम पहले ही वो माइनस कर देते हैं. दिस प्रैक्टिस इज अ रेगुलर इंडस्ट्री प्रैक्टिस अंडर फैक्टरिंग सर्विस. ठीक है, जैसे गोल्ड लोन, आप ज्वेलर के पास से गोल्ड लोन अवेल करते हो ना, यू जस्ट pledge your gold and they give you loan, correct? But they deduct the interest पहले से ही, उस पे जो ब्याज होता है वो पहले से ही माइनस करके आपको नेट एडवांस देते हैं. Are you following? So same practice is followed under factoring service. So factor says sir ये 27 लाख भी आपको नहीं दे पाऊंगा, इस पे जो पहले ब्याज बनता है ना, कमीशन, सॉरी नॉट ब्याज बट कमीशन जो बनता है ना, वी विल फर्स्ट सब्ट्रैक्ट आवर कमीशन at 1% on this advance, at 1% of 30 lakhs. So again repeating the story, I told factor मुझे 30 lakhs funding दे. Factor says no sir, outrightly पूरा तो मैं नहीं दे सकता, as a practice we need to withhold a reserve. आपकी क्रेडिट तो हमने देखी है, बट आप फ्यूचर, आज सबकी अच्छी क्रेडिट होती है, बट फिर भी पीपल कैनॉट बी ट्रस्ट वर्दी. सो हमें आरबीआई की गाइडलाइन है, वी हैव टू विदहेल्ड सम रिजर्व. तो मैंने बोला ठीक है, 10% जो आपका जो गाइडलाइन के हिसाब से रिजर्व बनता है वो माइनस करके ग्रॉस एडवांस 27 लाख का दे दो. नाउ फैक्टर इज सर इन इंडस्ट्री प्रैक्टिस, इस पे जो 1% कमीशन बनेगा कलेक्शन का, वो हम अभी पहले से ही माइनस कर देंगे. Are you following? So they will subtract 30 lakh पे 1%. So कितना आता है? 30,000. Yes or no? 0.3 lakh. And this amount we can give you as an advance. Are you following? 26 lakh 70,000. Everyone understood? So हमारे बिजनेस में कमीशन पहले ही काटा जाता है. Are you following? Okay, so I told कि अब मुझे 26.7 लाख का एडवांस दे. Factor says okay, I give you 26.7 lakh. Now I ask, इस पे इंटरेस्ट कितना? So he says sir I will charge 15%. So can I say interest on advance granted by factor? Can I say it will be 26.7 lakh into 15%, which comes to how much? 4 lakh 500. 26.7 lakh into 15%. 400,500. So this is the per annum rate. This is per annum interest rate. So this interest amount will be per annum. Are you getting this? This is an annual interest that I need to bear on advance that is granted by the factor. So can I say working note 1 से 4 lakh 500 आ गया. So can I say this is my net benefit before tax under two scenarios? अच्छा, taxation not given, so can I say this is net benefit after tax only? So let's calculate. 360 lakh minus 1.4 lakh minus 7.2 lakh. 351.4 lakh is the net benefit if I continue with in-house collection. ठीक है? And if I go with factor, then 360 lakh minus 3.6 lakh minus 4.0050. 352.395 lakh. 352.395 lakh. So can I say my benefit, my net benefit is more when I avail the factoring service? Yes or no? Are you getting this? So our answer should be company should avail the factoring service. Are you following? 0.995 का फायदा हो रहा है, एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है. अंडरस्टूड एवरीवन? Commission can be per annum. Per annum commission is already taken over here.
that commission was subtracted just to calculate interest on advance. ठीक है, कि पहले तो मुझे एडवांस कितना मिल रहा है फैक्टर से एंड उस पे ब्याज कितना बन रहा है. फॉर दैट वी हैड सबट्रैक्टेड दैट 1% ऑन 30 lakhs. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में कैसे प्रेजेंट किया है. सी सॉल्यूशन में ना, सॉल्यूशन में आंसर वुड बी सेम, द डिसीजन, द फाइनल डिसीजन वुड बी सेम. दिस वन एडवाइस. Since net benefit of availing factoring service is more, company should go for that. ठीक है, company should go for that. So just see over here. Cost of administration. Can I say अगर हम फैक्टरिंग सर्विस अवेल करेंगे तो ये 140 का फायदा हो जाएगा. एंड कॉस्ट ऑफ बैड डेट 720 का फायदा हो जाएगा. Yes or no? Just see over here. This they are trying to explain. ये 140 and 360 will not be there if we avail the factoring service. So savings in cost if we avail the factoring service is, can I say 1.4 and 7.2 lakh? Yes or no? Are you getting this? Oh, and if we avail the factoring service तो हमारा कॉस्ट क्या बनेगा. Can I say factoring commission of 360 and interest charges of 4,500,000? Are you getting this? So if we avail the factoring service, ये दो कॉस्ट की बचत, बट सामने 360 कमीशन वी विल पे एंड 4,500,000 का इंटरेस्ट वी विल पे. सो नेट बचत कितनी. Can I say just the difference between these two? Yes or no? Just calculate 352.395 minus 351.4. 352.395 minus 351.4. 0.995 का फायदा हो रहा है. It means ultimate saving बोलो या benefit बोलो, it is one and the same. So can you see net benefit 99,500? So this is nothing but calculating net benefit on incremental basis. Understood? Answer same ही आएगा. This is incremental savings or benefit, you can say. Savings in cost is ultimately nothing but benefit. Yes, COCD only in-house. बट और कॉम्प्लिकेट करना हो ना तो आई कैन एक्सप्लेन यू कि सीओसीडी फैक्टरिंग में भी आएगा. इवन इफ वी अवेल फैक्टरिंग सर्विस देयर वुड बी सम सीओसीडी बट दैट वुड बी लिटिल कॉम्प्लेक्स टू यू. मैं समझाऊंगा. फिलहाल टिल नाउ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. Sorry, solution 99,500. Even we got 99,500, but we followed total approach. They have followed incremental approach. ठीक है, आंसर सेम आएगा. Final decision making would be same. Since the savings in the firm, I have written since the net benefit to the firm is more in factoring, proposal is acceptable. Understood, students? So can I say in the solution they have ignored COCD? Sir, in the exam क्या? Yes, yes, you can follow this format in exam. See, I told you दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं. So if institute has shown the solution in one way, so that is acceptable. But ऐसा नहीं है कि दूसरा way is wrong. उसमें आपको गलत मिल जाएगा. No, you can reach Delhi via Jaipur route. You can reach Delhi via Ratlam route. It is same. You have to ultimately reach Delhi over here. Following? Acha, if you are able to create your own method and get this answer, then that is also correct. Are you following? So FM mein there is no such accounting rules or accounting principles that you have to stick.
No such taxation laws that you have to stick. You have to go by logic and understanding, conceptual clarity. आपके पास और कोई method है इसका? You can use that as well. Are you following? So that's the beauty of this subject. Sir, if we take COCD in in-house by assumption too, then COCD will not come in factoring here. I am explaining you. Wait, have some patience. First of all, just be clear with the current solution. इसमें कोई डाउट है कि नहीं? वी कैन मूव फॉरवर्ड कि अब सीओसीडी होता तो क्या होता. ठीक है. सो नाउ लेट्स अज्यूम दैट सीओसीडी है. Currently in this solution there is no COCD. ICAI has assumed since COCD rate is, so मैं नोट लिख देता हूं यहां पे, since rate of COCD is not given presently, it is ignored. ठीक है. Now alternative assuming COCD rate as 15%. सर ये 15% आप मंथ का रेट ला रहे हो? ए नो, आई एम अज्यूमिंग कि अगर मैं बोरोइंग करता तो जो फैक्टरिंग चार्ज कर रहे हैं मेरे से वो दूसरी बैंक, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज करेंगे. आर यू फॉलोइंग? सो उस केस में क्या हो जाता? कैन आई से इन हाउस, कैन आई से टू calculate COCD we need to follow two steps. Yes or no? Step number 1, calculate debtors. So in-house collection होता तो COCD कुछ इस तरह होता. Step 1, calculate debtors. ठीक है. Calculate debtors. And यहाँ पे since overall this is a factoring वाला question, we will value debtors on sales. ठीक है. So my debtors is, can I say 360 lakh? ACP is 30 days. I am needing fund of 30 lakhs. Step 2, apply interest rate per annum. Apply interest rate of 15% per annum. Understood? So क्या हो जाता? Can I say 30 lakh पे 15% comes to how much? 4.5 lakh. Yes or no? 4.5 lakh हो जाता. Understood? Everyone? And see, this is assuming COCD rate as 15%. तो in-house collection में 4,50,000 आ जाता. ठीक है. सो यहां पे हम, बट आइडियली दिस assumption has to be taken only when COCD rate is not given. Only when. बाकी ideally they will give you ROI कितना, opportunity cost कितना. ठीक है. Generally ROI opportunity cost has to be more than 15%. Generally वो बैंक रेट से ज्यादा होता है. Now factoring में, see now if we are assuming this now if we are assuming this assumption of taking COCD rate at 15%, तो अब देखो आपका इंटरेस्ट फिलहाल इन हाउस कलेक्ट फैक्टरिंग सर्विस में कितना है? 4,05,000 है. करेक्ट. करंटली इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस टू फैक्टर कितना है? 4,05,000 है. करेक्ट. बट आई एम सेइंग ये 4,05,000 नहीं, ये 4,50,000 ही होगा. समझ लो. करंटली वी आर अवेलिंग एडवांसेस फ्रॉम फैक्टर, मींस हमने कुछ फंडिंग लिया फैक्टर से और हम ईयरली ब्याज 4,05,000 दे रहे हैं. बट आई एम सेइंग 4,05,000 नहीं, 4,05,000 नहीं, आप 4,50,000 ही दोगे. कैसे बताता हूं. सी आइडियली, सी
just come to this point, calculation of interest. Ideally, this is the amount blocked in debtors. Yes or no? Ideally, this is the funding that I actually want. Hey, are you getting this? For smooth running of business, this amount I actually want. This is my actual amount blocked in debtors. So मुझे फंडिंग तो 30 lakhs की चाहिए, बट फैक्टर ने मुझे एडवांस कितना दिया? 26.7 lakh. Yes or no? I need 30 lakh का फंडिंग. I want to buy a house of 30 lakh, but bank is granting or factor is granting me loan of 26.7 lakh. So can I say there is shortfall of 3.3 lakhs? Yes or no? There is shortfall of 3.3 lakhs. करेक्ट. ये फंडिंग तो मुझे मिली नहीं है. 3.3 कैसे? कैन आई से फैक्टरिंग रिजर्व की फंडिंग मुझे नहीं मिली, एंड उसने जो कमीशन काट दिया है, उसने जो अपना कमीशन काट दिया है, ये 30,000 की मुझे फंडिंग नहीं मिली. तो ये मुझे 3.3 लाख कहीं और से, ये फैक्टर से नहीं बट दूसरे बैंक से, दूसरे फैक्टर से अरेंज तो करना पड़ेगा. Yes or no? So there is a shortfall of 3.30 lakhs, 3.3 lakhs. Correct? So now what I will do, I will look for these sources. कि 3.3 lakh मैं कहां से अरेंज करूंगा? तो अगेन सेम, ओन फंड, बोरोइंग फंड, बोरोड फंड. ठीक है. इफ ओन फंड तो मुझे आरओआई और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्लाई करना पड़ेगा. Yes or no? But is ROI or opportunity cost given in the question? Not given. So can I say ये source तो चला गया, out of the scope. So what is the other option? I will borrow 3.3 lakhs. Correct? Oh, if I am going for a borrowing, so what bank will charge as an interest? Again same assumption. जो factor charge कर रहा है वही other bank will charge, assuming this is the market interest rate. So can I say 30 lakh I will borrow at, this 3.3 lakh will be borrowed at 15% in absence of other interest rate or in absence of ROI or opportunity cost. Are you getting this? So ये 3,30,000 पे 15% ब्याज मैं भरूंगा, कितना आएगा? 49,500. यस और नो? सो फैक्टरिंग की सर्विस अवेल करता हूं तो भी मुझे इंटरेस्ट कितना भरना पड़ रहा है? टोटल इंटरेस्ट 4,05,000 आई विल पे टू द फैक्टर by giving me 26.7 lakh of loan, and plus 49,500 that I will pay to other bank for arranging this 3.3 lakhs. Are you getting this? So ultimately 4,50,000 आया. Understood? So net interest, if I assume this alternative, if I assume this 15%, are you following? So net interest under both the cases would be 4,50,000. सेम क्यों आ रहा है? बिकॉज हम ये रेट सेम अज्यूम कर रहे हैं दोनों में. आर यू फॉलोइंग? अगर आरओआई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते तो ये दोनों का आंसर अलग आ जाता. बट इन दिस ऑल्टरनेटिव वे ऑफ सॉल्विंग वी आर अज्यूमिंग जो फैक्टर का इंटरेस्ट रेट है वही दूसरी बैंक का इंटरेस्ट रेट है, तो आंसर दोनों में इंटरेस्ट सेम ही आएगा. आर यू फॉलोइंग? सीओसीडी विल बी 450 and under factoring service interest on advance granted will be 4,05,000 and COCD under that case would be 49,500. Are you following everyone? So this is nothing but interest to factor and this is nothing but COCD for managing or for funding the balance required funds. Followed? So this is an additional complexity if you go for this assumption, if you go for this alternative, but this is also logical. Are you getting this? कि अमाउंट जो ब्लॉक हो रहा है डेटर्स में वो कहीं से तो मैं मैनेज करूंगा, इवन इफ आई एम कलेक्टिंग इन हाउस. और अगर फैक्टर की सर्विस अवेल करता हूं तो जो शॉर्टफॉल है वो फंडिंग में कहीं से अवेल करूंगा. Are you getting this? So this is also a logical assumption, but this will unnecessarily create extra complexity. ठीक है? So to avoid that complexity,
this standard assumption has been taken by institute. But both is correct. Huh? This is extra complexity that you will add in your solution if you go for alternative. अंडरस्टूड एवरीवन. सो इस केस में देखो यहाँ क्या चेंजेस हो जाते हैं. सीओसीडी देखो क्या होता. यहाँ पे सीओसीडी इफ वी गो फॉर इन हाउस कलेक्शन कहना से 450 आ जाता. एंड इफ आई अवेल द फैक्टरिंग सर्विस तो मेरा सीओसीडी would be on the balance shortfall of funding that I avail from other banks, other institution. So can I see यहाँ पे वो 49,500 आ जाता. Are you getting this? So at the end मेरा ब्याज तो 4,50,000 जा रहा है and at the end यहाँ पे भी 450 जा रहा है. दोनों में सेम क्यों? Because we have assumed 15% in both the cases. Are you following students? Everyone getting it? तो ये चेंजेस हो जाते हैं आपके सोल्यूशन में. बट फिलहाल वी आर फॉलोइंग द सोल्यूशन दैट इंस्टीट्यूट हैज फॉलोड. ठीक है. सो विद दिस वी एंड फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट. एंड आई गेस वी ऑल्सो अंडरस्टूड forfeiting, right? Forfeiting is first of all transactions अंडर इंटरनेशनल सिनेरियो. इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस में होते हैं. आई गेस आई हैव एक्सप्लेन दैट. हाँ ये रहा फैक्टरिंग forfeiting अरेंजमेंट थ्रू अ डिटेल चार्ज. आई एक्सप्लेन दैट. ठीक है. सो विद दिस वी एंड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. नाउ जस्ट लेट्स क्विकली मूव टू कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट. Then we will understand payables management, and if time permits, अगर टाइम बचता है तो we will solve some practical problem covering all the concepts that we have learned in the chapter of management of working capital. Cash and treasury management. See, treasury management or managing cash is equally important, just like managing your receivables, managing your payables. Can I say कंपनी के पास excess cash होना भी हानिकारक है? Means you are not able to utilize this cash efficiently. आपके पास आपके लॉकर में excess cash पड़ा है. Means you are not able to optimize the investment opportunities available. Are you getting this? And बहुत कम कैश होना भी एक हानिकारक है. इट विल अफेक्ट योर टाइमली कैश आउटफ्लोज. जो आपको टाइम पे खर्चे करने हैं उसके लिए अगर कैश अवेलेबल ना हो तो कहने से दैट इज ऑल्सो वन ऑफ हानिकारक सिचुएशन. सो हैविंग एक्सेस कैश, कोई भी चीज एक्सेस होना या कोई भी चीज बहुत कम होना is dangerous under financial management. Having excess of something, abundance, or nothing of something, or nothing, excess बहुत ज्यादा या बहुत कम दोनों हानिकारक है. So this chapter tries to explain you what should be the optimum cash balance that company should keep with itself. ठीक है. Using various models, using William Baumol model, and there is one more Miller-Orr model. So these finance scholars have tried to explain you कि कंपनी को आइडल कैश कितना रखना चाहिए in such a way कि company does not lose the investment opportunity and company also does not lose its image. Its image means वो timely payment नहीं कर पा रही है अपने employees को, अपने suppliers को. कहने से credit image will go down in that case. So ऐसे company is not able to meet its daily routine cash outflow. तो वो भी is dangerous. So what should be the optimum cash that company should keep with itself?
is explained by William Baumol in his William Baumol model of cash management and Miller and all model in his optimum cash model. ठीक है? William Baumol model has also given his model for economic order quantity, means what should be the optimum order quantity of inventory. If you remember under material costing, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैश में है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ कैश एंड मैनेजमेंट ट्रेजरी मैनेजमेंट में है. आर यू फॉलोइंग? एंटायर सेम कॉन्सेप्ट इज रेप्लिकेटेड ओवर ईयर. हाँ, बस यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट नहीं होगा, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होगा. आर यू फॉलोइंग? बिकॉज वी डो नॉट ऑर्डर कैश, वी ट्रांजैक्ट इन कैश. सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा इंस्टेड ऑफ स्टोरेज कॉस्ट. But we will see what is the formula and we will see how to deal with the practical problem under William Baumol model. Next is preparing cash budget or forecasting. Budget is nothing but forecasting of cash requirements. Forecasting of future cash needs. ठीक है? ऑब्वियसली बजट हम फ्यूचर का करेंगे. आर यू गेटिंग दिस? वी विल प्रिपेयर बजट और वी विल फोरकास्ट द कैश नीड्स ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शन. सो कैश बजट में हमें ये सीखना है कि लेट्स से यू आर अ फाइनेंशियल मैनेजर एंड यू आर रिपोर्टिंग टू CFO. अब CFO इज आस्किंग यू, सी टुडे इज 13 Jan, सो CFO इज आस्किंग यू कि मुझे ना फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एक बड़ा प्रोजेक्ट, ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट लेना है, उसके लिए मुझे कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है. तो हमारा 31 मार्च के एंड पे या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कितना कैश है वो मुझे कैलकुलेट करके दे. सो कैन आई इन दैट केस नथिंग बट ही इज आस्किंग यू टू प्रिपेयर कैश बजट. आर यू फॉलोइंग स्टूडेंट्स? सो कैश बजट helps in future decision making, helps in decision making for various investment opportunities. हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ले कि ना ले, वो प्रोजेक्ट ले कि ना ले, डिपेंड किस पे करता है कि उस डे पे, उस समय पे क्या I have enough cash flows. If I don't have enough cash flows, then there is no question to invest in the project. कैश फ्लो ही नहीं है तो आप क्या इन्वेस्टमेंट करोगे? आर यू फॉलोइंग? सो इन दैट सिनेरियो, इन सच सिनेरियोस, प्रिपेयरिंग कैश बजट helps you in decision making whether you should go for the investment or not, whether you have sufficient cash flow for investment or not. Following? Okay, so first of all let's start with cash budget. I guess cash budget भी overall you have studied in costing under budgeting chapter. ठीक है? So cash budget का भी I told you FM is all about formats and formulas. So cash budget का भी एक format है. What is cash budget? Can I say preparing future cash needs? Yes or no? In short, can I say we have to prepare cash and bank account? ये जो हम 11th-12th में बनाते थे ना, कैश एंड बैंक अकाउंट, रिसीव पेमेंट अकाउंट, नथिंग बट रिसीव पेमेंट अकाउंट. कितना कैश आया, कितना कैश गया. आर यू फॉलोइंग? सो सिंपल वी हैव टू प्रिपेयर रिसीव पेमेंट अकाउंट अंडर कैश बजट. हाँ, बट डिफरेंस इतना है कि अभी तक आपने जो 11th-12th में रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाया था वो पास्ट ट्रांजेक्शन का बनाया था. वो हिस्टोरिकल डेटा मींस जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं उस बेस पे आपने रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाया था. बट हियर वी आर प्रिपेयरिंग रिसीव पेमेंट अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शंस दैट आर लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? सो द कॉन्सेप्ट इज सेम, बस अब ट्रांजैक्शंस आर लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, तो उसका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे. एंड कैन आई से जो बैलेंस आएगा दिस वुड बी फ्यूचर बैलेंस ऑफ कैश. तो कहना है ये एस्टिमेटेड बेसिस पे ही होगा. आर यू फॉलोइंग? बिकॉज वी हैव नॉट सीन व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर. फ्यूचर इज अनसर्टन.
सो हम यहाँ पे जो रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ कैश बनाएंगे दैट वुड बी एन एस्टिमेटेड कैश बैलेंस. अंदाज से कितना कैश बैलेंस होगा आफ्टर 3 months, आफ्टर 4 months, दैट वी आर प्रिपेयरिंग ओवर हियर इन दिस चैप्टर. ठीक है. Yes, obviously we are preparing cash budget, so everything on cash concept, nothing on accrual. So let's say sale 2 महीने पहले हो गया है and I am preparing receipt payment account for January month. सेल नवंबर में हो गया है बट उसका पेमेंट जैन में आ रहा है, तो इट विल be included in our receipt of Jan month. Are you following? You have to simply prepare the cash and bank account. Means जब जब जो पैसा आया तब तब वो रिसीप्ट में लेने का, जब जब वो पेमेंट हुआ तब जब जब पैसा गया तब तब पेमेंट में लेने का. Irrespective when the sale had happened, irrespective when the purchase had happened. Are you following, students? Understood? So cash budget का format is nothing but preparing receipt and payment account. But we will not prepare in this T style. We will prepare in vertical format. ठीक है? So can I say cash account is always started with opening cash balance? A cash means cash and bank का. सिर्फ हार्ड कैश की बात नहीं कर रहा हूं. Here cash account means cash and bank account. So let's say this is Jan month, Feb month, March month. Likewise, जो month का बोला है, we will prepare for that months. So opening balance आ जाएगा. इस opening balance में I will add the receipts. Yes or no? अब receipts के line items के components क्या हो सकता है? Can I say receipts में sale of goods नहीं होगा, but collection of debtors होगा. Are you following? Receipts में collection from debtors. The common sources of receipts would be collection from debtors, irrespective of sales जब भी हुआ हो. Number 2, can I say if I avail short term loan, तो वो भी receipt में आएगा. पैसा आया, avail of loan. अच्छा, sale of fixed assets or sale of assets. Yes or no? If I sell investment, वो भी receipt में आएगा. Sale of investment. So these are some common components or common line items of receipt. Are you getting this? ये सब receipt में आएगा. हाँ, cash sales very important. Cash sales. हाँ, if sales is in cash mode तो वो आएगा. But if it is credit sales, तो credit sales का amount नहीं आएगा. The collection from those credit sales would come for respective months. ठीक है? So these are general line items that you will commonly see under receipt side. अब receipt में से हम payment minus करेंगे. So general items under payment side would be cash purchases if any. Credit purchase will not come, but payment to creditors will come. Payment to creditors. Payment of taxes will come. Taxes payment. See, these are not a standard line items. ये generally जो question में दिखेंगे ना आपको, वो बता रहा हूं. Can I say payment for expenses होगा? Like wages, salaries, admin expense. Yes or no? ये आएगा. फिर if we repay the loan, पैसा जाएगा, so it will come under payment side. So repayment of loan. Oh, can I say any investment, any new investment that I make in fixed asset or in general short-term investment, वो भी payment side आएगा because cash is going out from the pocket. So investment in capex, whether I buy new fixed asset, etc., or short-term investment made. Receipt में sale of short-term investment, sale of capex आएगा. यहाँ पे new purchase of capex, purchase of new investment. ठीक है? So these are general line items that you will see in the questions of cash budget. Can I say opening balance plus receipts less payment will give me closing cash balance?
closing cash and bank balance for each month, and with this I can estimate कि मार्च एंड में मेरे पास कितना कैश फ्लो अवेलेबल हो सकता है, because this is an estimate amount. एंड बेस्ड ऑन दिस आई कैन डिसाइड कि मैं क्या नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. फॉलोड. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बजट. Any confusions, any doubts, students? ट्रेजरी मैनेजमेंट में, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, सी मोस्ट ऑफ द बिग ब्लू चिप कंपनीज हैव इन हाउस ट्रेजरी डिपार्टमेंट. पूरा ट्रेजरी डिपार्टमेंट ही अलग होता है. वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट को काम क्या करना होता है? तो फर्स्ट इज मैनेजिंग द फ्यूचर कैश नीड्स. सेकेंड इज करेंसी मैनेजमेंट. करेंसी मीन्स फॉरेक्स मैनेजमेंट, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट. कौन से फॉरेक्स करेंसी में हमें डील करना चाहिए? इट मीन्स कि क्या, लेट्स से आई एम एक्सपोर्टिंग टू जर्मनी, तो मैं मेरा एक्सपोर्ट का इनवॉइस बनाऊंगा, यस और नो, बिकॉज आई एम एन एक्सपोर्टर. तो मेरा एक्सपोर्ट का इनवॉइस यूएसडी में बनाऊं कि जर्मन फ्रांक, जर्मन की करेंसी में बनाऊं कि फ्रांस की करेंसी में बनाऊं, किसमें फायदा कंपनी का है, ये सब फॉरेक्स डिपार्टमेंट का काम होता है. एंड इट कम्स अंडर ट्रेजरी मैनेजमेंट, मैनेजिंग योर फॉरेक्स. फॉरेक्स में कैन आई से देयर इज एक्सचेंज डिफरेंस का रिस्क. तो सबका एक्सचेंज डिफरेंस का रिस्क कंपनी को बेयर ना करना पड़े, तो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड हेजिंग टेक्निक दैट यू विल लर्न इन सीए फाइनेंस. तो हेजिंग का काम इज ऑल्सो अंडर ट्रेजरी डिपार्टमेंट. आर यू फॉलोइंग? सो इट इज नथिंग बट, सी, ट्रेजरी डिपार्टमेंट एडवाइसेस on the currency of overseas sales invoice. Are you following? कौन से करेंसी में हमारा एक्सपोर्ट सेल्स का इनवॉइस बनना चाहिए? This all comes under treasury department. Then normal fund flow, fund management, and then normal dealing with banks. बैंक्स मीन्स कौन से बैंक से मुझे कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, हाउ टू नेगोशिएट द डील्स, द इंटरेस्ट रेट्स विद द बैंक, all comes under treasury department. Are you following? So after becoming CA, if you are under finance field and specifically under treasury department, तो ये सब आपको सीखने मिलेगा. Everyone getting this? So ये सब treasury department का काम होता है, functions होते हैं. Let's come to, can you see the format of cash budget? Receipts, ओपनिंग बैलेंस में रिसीप्ट्स में इंक्लूड कर दिया, बट वी कैन राइट ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीप्ट्स लेस पेमेंट्स एंड यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस, सरप्लस और शॉर्टफॉल. ठीक है? सो एवरीवन कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड लेट्स try to prepare cash budget. Prepare monthly cash budget for 6 months beginning April 2024 on the basis of following information. तो कहना है मुझे मेरा relevant period of cash budget is April, May, June, July, August, September. Everyone followed? So can I say, let's just prepare the primary, the basic, the foundation format of cash budget. 6 महीने का बनाना है and starting from April. So this is April, May, June, July, August and September. ठीक है? I will start with opening balance. I will add receipts. 2 पेज रिसिप्ट का छोड़ देता हूं बिकॉज आई हैव स्पेस कंस्ट्रेंट. एंड आई विल सबट्रैक्ट पेमेंट्स. ठीक है? 2 पेज इसका भी छोड़ देता हूं एंड आई विल गेट क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस. Understood? So basic format is ready. Now we have to see
कि हमारा रिसीप्ट्स में कौन से लाइन आइटम्स आएंगे एंड पेमेंट्स में कौन से लाइन आइटम्स आएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट और पॉइंट नंबर वन, इंफॉर्मेशन नंबर वन, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स आर एज फॉलोज. Now, under cash budget, is sales value relevant for us? कि the collection from sales is relevant for us? बोलो क्या लग रहा है, ये सारे सेल्स की वैल्यू रेलेवेंट है कि ये सेल्स कब कलेक्ट होगा, दैट इज रेलेवेंट फॉर अस. कैन आई से कलेक्शन फ्रॉम सेल्स? सो दिस, so I cannot write April में 80,000 receipt side. Are you following? I cannot straight away write April में 80,000 sales receipt side. अरे भाई ये 80,000 कैश सेल्स है पूरा, क्रेडिट कितना है, क्रेडिट है तो ये कलेक्शन कब होगा ये जानना पड़ेगा ना. सो वी कैन नॉट आउटराइटली राइट, abruptly write 80,000 under receipt side. We need to see for more information. Wages and salaries to be payable as follows. So this is expense का detail. हाँ, now adjustment 3 says of the sales 80% is on credit and 20% is on cash. Okay. So now let's prepare working note number 1. Collection of sales. Okay. So can I say it 20% is on cash? मतलब कि अप्रैल मंथ में 80,000 का 20% will be my cash sales. Yes or no, everyone? So cash sales is clear to everyone. So number 1 हम पहले लिखेंगे कैश सेल्स. तो कैश सेल्स तो जब जब सेल्स हुआ है उसका 20% का रिसीप्ट वो मंथ में आ ही जाएगा. यस और नो? सो अप्रैल का सेल इज 80,000, तो 80,000 का 20% आई विल रिसीव इन अप्रैल ओनली. करेक्ट, इंस्टेंट. सो 16,000 इन अप्रैल. मई में 60,000 का 20%, सो 12,000. जून में 80 मीन्स अगेन 16,000. जुलाई में 1 लाख, सो 20,000 इन जुलाई. अगस्त में 80,000 मीन्स 8 to 16 एंड सितंबर में 60,000. 60,000 into 2, 12,000. 20%. Correct? So cash sales done. Now, can I say 80% of the sales is credit? अब उसका कलेक्शन कब हो रहा है? लेट्स प्रिपेयर थ्रू वर्किंग नोट. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट क्रेडिट सेल्स. सो 80% इज ऑन क्रेडिट. अब ये उसका कलेक्शन कब हो रहा है? लेट्स सी. सो 75% ऑफ दिस क्रेडिट सेल्स are collected within 1 month after sale and the balance in 2 months after sales. Oh, means, see, let's prepare a working note. This is Feb, March, April, May, June, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. ठीक है. सबसे पहले तो लेट्स कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स फॉर ईच मंथ. फेब से लेके सितंबर. कैन आई से क्रेडिट सेल्स इज 80% ऑफ द सेल्स. तो कैन आई से फेब का 120 का 80% कितना होगा? कैन आई से 96,000 होगा फेब में क्रेडिट सेल्स. मार्च में 1,40,000 का 80%, 1,40,000 का 80%, so 14,800 comes to 1,12,000. So March का credit sales would be 1,12,000. Yes or no? April का 80,000 का 80%, can I say 64,000 will be credit sales of April.
मई में 60,000 का 80%, 48,000। जून 64, जुलाई 80, जून 64, जुलाई 80, अगस्त में 64 एंड सितंबर में 48,000। यस और नो? ठीक है। सो दिस इज माय क्रेडिट सेल्स। नाउ वी हैव टू सी कि इसका कलेक्शन कब हो रहा है। करेक्ट। सो द क्वेश्चन सेज 75,000 of the credit sales that you have calculated is collected within 1 month after sales. Hey, can I say अप्रैल का 75% और 75% of above? कैन आई से 96 का 75% करेंगे तो कितना आएगा? 96 का 75%, 72,000 आएगा। यस और नो? कैन आई से दिस 72,000 will be collected 1 month after this? Are you following everyone? So a Feb का 75% will be paid in March. Yes or no? तो मार्च के रिसिप्ट में 72 आएगा। Everyone, are you getting this? Following ना everyone? So मार्च का फेब का 75% of credit sales is paid in March. तो कहना है इसे मार्च का 75% of credit sales will be paid in April and so on. Correct. So the timing of collection is important rather than when sales is happening. तो कहना है इसे फेब का 75%, 84,000 will be collected in April. Yes or no? Likewise, April के credit sales का 75% will be paid in May. So paid नहीं, collected in May 64,000 का 75%, 48,000. 48,000 of May का credit sales will be collected in June, 36,000. 48,000, 80,000 का 75%, 60,000. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सितंबर में अगस्त के क्रेडिट सेल्स का 75% आएगा, 48,000. Space is very less, so I am just writing 48K. 48K. Understood? So 75% collected in next month. ये तो बाकी का 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स इज कलेक्टेड व्हेन? तो उसकी इंफॉर्मेशन दी है बैलेंस इन द 2 months आफ्टर सेल। मींस की फेब का 96,000 इज माय क्रेडिट सेल्स, उसका 25% इज कलेक्टेड इन 2 months आफ्टर सेल्स। मींस कहना है से अप्रैल में होगा। यस और नो? सो 96,000 का 25%, 24,000 of Feb card sales is collected in April. Everyone understanding? So this is 24,000. Likewise, can I say March के 25% of credit sales will be collected in May? Yes or no? So 1,12,000 into 25%. So this comes to 28,000. Likewise, अप्रैल के क्रेडिट सेल्स का 25%, 64,000 into 25, 16,000 will be collected in June. Are you following everyone? Likewise, May के क्रेडिट सेल्स का 25% will be collected in July, 12,000. Likewise, June के क्रेडिट सेल्स का 25%, which comes to 16,000, will be collected in August. And last but not the least, सितंबर में जुलाई के क्रेडिट सेल्स का 25% will be collected in September, 20,000. Everyone understood this? 2 months after.
Followed. So can I say our relevant period in the question is from April to September? Yes or no? हमें तो इसी पीरियड का कैश बजट बनाना है. So tell me what is the total collection in April, May, June, July, August, September? Can I say April में 84 plus 24 कलेक्ट हुआ होगा? ये दिस इज क्रेडिट सेल्स का अमाउंट है, 64 ऐड मत कर देना. So 84 plus 24, 1,08,000 in April collection from customers. May में 48 plus 28, 76,000 in May collection from customers. 52 in June, 60 in July, 76 in August, and 48 plus 20, 68K in September. Everyone understood this, how to calculate collection of sales, or you can say collection from customers, from debtors. So the timing of receipt is important rather than sales happening. Are you following? So यहाँ पे working note 1 से I will write collection from customers, collection from debtors. वर्किंग नोट 1 में हमने डिटेल में कैलकुलेट किया. सो यहाँ पे नाउ जस्ट कॉपी पेस्ट द वैल्यूज. 108, 76, 52, 108, 76, 52, 60, 76, 68. ठीक है. सो दिस वर द कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. एवरीवन, एनी डाउट्स इन दिस? क्लियर? सो सिंपल एज अ लेमैन यू हैव टू प्रिपेयर कि मेरे दुकान के गल्ले में कितने पैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट, सॉरी, पॉइंट नंबर 3 डन. नाउ परचेज कब हो रहा है? परचेज पहले तो इट इज 80% ऑफ सेल्स. आर यू गेटिंग दिस? एंड दे आर ऑन क्रेडिट and paid for in the month preceding the sales. It means what? Can I say, first of all, I need to prepare a working note of how much is my credit purchases. ठीक है. How much is my credit purchases. फिर देखेंगे कि वो कब पेमेंट हो रहा है. Everyone following this? So let's prepare working note 2. Payment to creditors for purchases. ठीक है. So again, March, April, May, June, July, August, September. ठीक है. First of all, credit purchases is how much? Can I say it is 80% of sales? Yes or no? 80% बोला है ना, and it is entirely on credit. तो मार्च का सेल्स कितना था? 1,40,000. तो मार्च का परचेज कितना हुआ होगा? कैन आई से 140 का 80%, विच कम्स टू 1,12,000. लाइकवाइज फॉर अप्रैल, अप्रैल का परचेज कितना हुआ होगा? 64,000. Likewise for May, 60,000 is sales, तो उसका 80%, 48,000 will be May का purchases. June, 8,864. July, 80,000. August, 64. And 48. So this would be my credit purchases in the respective one. अब इसका पेमेंट, सी वी आर नॉट कंसर्न विद क्रेडिट परचेजेस, वी आर कंसर्न विद इसका पेमेंट कब हो रहा है. कहना है ये सबका पेमेंट, द क्वेश्चन सेज इट इज पेड इन द मंथ प्रीसीडिंग द सेल्स. मींस जो जो मंथ में खरीदी हुआ उसके एक मंथ पहले, मींस वी आर पेइंग इट इन एडवांस.
Yes or no? Everyone getting this? Preceding the sales. Bolo, any doubts, any questions? Clear everyone? So preceding the sale. So can I say अप्रैल के परचेज का पेमेंट हुआ होगा मार्च में? पेमेंट 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ बिफोर बोलो या 1 मंथ एडवांस बोलो, तो अप्रैल का परचेज का पेमेंट वुड हैव हैपेंड इन मार्च। तो कहना है इसे अप्रैल मंथ में मई का पेमेंट हुआ होगा, मई में जून के परचेज का पेमेंट हुआ होगा। सो वी आर इन शॉर्ट पेइंग 1 मंथ इन एडवांस। सो यहाँ पे 48,000 मई में जून का परचेज वुड हैव बीन पेड, जून में जुलाई का परचेज वुड हैव बीन पेड, यस और नो? जुलाई में अगस्त का परचेजेस वुड हैव बीन पेड, अगस्त में सितंबर का परचेजेस वुड हैव बीन पेड, एंड कहना है सितंबर में अक्टूबर का परचेजेस वुड हैव बीन पेड। सो इज इंफॉर्मेशन फॉर अक्टूबर गिवन? यस गिवन। सो अक्टूबर में माय परचेजेस इज 1 लाख का 80%। आर यू फॉलोइंग? सो यहाँ पे मैं अक्टूबर भी बना देता हूं, सितंबर अक्टूबर। सितंबर वाज 48,000, अक्टूबर में परचेजेस वुड हैव बीन 80,000, तो उसका पेमेंट सितंबर में किया होगा, करेक्ट? माय रेलेवेंट बजट पीरियड इज अप्रैल टू सितंबर, तो उसमें कितना पेमेंट हो रहा है? कहना है 48, दिस इज द पेमेंट फॉर माय रेलेवेंट बजटेड पीरियड, यस और नो? सो आई विल राइट दिस अंडर पेमेंट, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस। ठीक है, देर इज नो कैश परचेजेस, सो एंटायर ऑन क्रेडिट। तो आंसर क्या है? 48 64 80, 64 48 80, 48 64 80, 64 48 80, 48 64 80, 64, क्या था भूल गया, 64 48 80, 64 48 80। ठीक है, सो दिस इज माय पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सो एडजस्टमेंट नंबर 4 ऑल्सो डन। The firm has 10% debentures of 1,20,000. Interest on this has to be paid quarterly in Jan, April and so on. ठीक है, so कहना है interest on debentures आएगा in my payment side. So working note 3, calculation of interest on debentures. ठीक है, टोटल डिबेंचर इज 1,20,000, उसका 10%, तो कहने से 12,000 इज माई इंटरेस्ट पर एनम, यस और नो? अब ये 12,000 का पेमेंट कब हो रहा है? तो बोल रहे क्वार्टरली हो रहा है। ओ ओके, क्वार्टरली हो रहा है, तो कब कब हो रहा है? फर्स्ट इज इन जैन, फर्स्ट ट्रांच ऑफ इंटरेस्ट इज पेड इन जैन, सेकेंड इज इन अप्रैल, सो कहना है फेब मार्च अप्रैल, after 3 months. So now next two tranches, tranche would be in June, July, August. Yes or no? September, October and November. Followed everyone? Understood? So 12,000, if I quarterly divide the interest, 3,000 each. Are you getting this? Feb, March, April, May, June, sorry, July आएगा, May, June, July. So this would be July month. August, September, and this would be October month. ठीक है, so this is how interest would be paid.
after every 3 months. Understood? So in this chart, our relevant period is April and July. हम जैन का बजट नहीं बना रहे, अक्टूबर का भी नहीं बना रहे हैं. आर यू गेटिंग दिस? सो अप्रैल मंथ में पेमेंट साइड 3000 आएगा और जुलाई मंथ में पेमेंट साइड 3000 आएगा. सो दिस इज रेलेवेंट फॉर आवर बजटेड पीरियड. सो कैन आई से इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अप्रैल में आएगा 3000. दिस ऑल इज अंडर पेमेंट साइड. फिर मई जून जुलाई, और जुलाई में 3000 आएगा. अंडरस्टूड? एंड दिस इज फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 3. Followed everyone? Any doubts in this? Yes, July and October. The firm is to make advance payment of tax of 5000 in July. तो can I say again जुलाई में पेमेंट साइड एडवांस टैक्स आएगा, बट दिस इज ओनली पेड इन जुलाई. सो जुलाई के कॉलम में लिखूंगा 5000, नॉट इन अदर मंथ्स. सिंपल. The firm had a cash balance of 20,000 on 1st April. Can I say this is the start balance, opening balance in April month? So मैं opening balance में 20,000 लिख दूंगा. Followed everyone? Which is the minimum desired level of cash balance? Any surplus or deficit below or above this level is made by temporary cash investment or liquidation or temporary cash investment or temporary borrowings at the end of each month, and interest on this is to be ignored. Hey, what is this adjustment trying to say? It is saying कि this is 20,000 is the balance that we want to keep for each month at any given point in time. हमारा क्लोजिंग बैलेंस 20 होना चाहिए. दिस इज द ऑप्टिमम बैलेंस दैट वी वांट टू कीप ईच मंथ. दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग. तो सर अगर अप्रैल में सरप्लस आया तो उसका हम क्या करेंगे? तो क्वेश्चन इज सेइंग अगर सरप्लस है तो यू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, यू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. आर यू फॉलोइंग? सो लेट्स से ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीप्ट प्लस क्लोजिंग बैलेंस सब मिला के 2 लाख आ रहा है फॉर अप्रैल. बट क्वेश्चन सेज यू हैव टू कीप ओनली 20,000. एनी सरप्लस you will invest in short term securities 1,80,000. Are you following this? This is what last adjustment says. अच्छा सर 20,000 रखना है, सिर्फ 10,000 आ रहा है बैलेंस, तो उस केस में क्या? तो आइदर यू विल बोरो फंड्स फ्रॉम आउटसाइड, और आपने जो पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया होगा ना उसको सेल आउट कर दो एंड ब्रिंग द फंड्स. Are you following? But question says at any given point in time, the optimum minimum balance that you have to keep is 20,000 only. उसके ऊपर नीचे हो रहा है आपके गल्ले में, ज्यादा आ गया गल्ले में तो उसको इन्वेस्ट कर दो कहीं और. कम पड़ रहा है आपके गल्ले में तो कहीं वो इन्वेस्टमेंट आइदर यू ब्रेक आउट और आइदर यू बोरो द फंड्स. Followed everyone? So this is what question or adjustment number is trying to explain you. But before that, कैन आई से वेजिस सैलरी तो रह गया, इसका कोई एडजस्टमेंट या इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब पेमेंट हुआ है. आर यू फॉलोइंग? सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जब जब वेजिस सैलरी ड्यू हो रहे तब तब उसका पेमेंट कर दिया हमने. आर यू फॉलोइंग? सो यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ वेजिस, पेमेंट ऑफ वेजिस एंड सैलरीज, क्योंकि बोला नहीं है ना कि कब उसका पेमेंट हुआ है. तो जब जब ड्यू हो रहा है, जब जब पेबल है तब तब एंड में पे कर दिया. सो कहना है 9, 8, 10, 9, 8, 10, 10, 9, 9, 10, 9, 9. ठीक है? सो माय ओवरऑल कैश बजट इज रेडी नाउ. आर यू फॉलोइंग स्टूडेंट्स?
So first of all, just see the solution. Opening balance will be same क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमें 20 रखना है. आर यू फॉलोइंग? रिसिप्ट साइड में कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. ठीक है, तो हमारा भी वही है, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. जस्ट चेक द अमाउंट. कैश सेल्स का 1612 1620 1612 1612 1620 1612 मैच्ड. कैश कलेक्शंस डन. Collection from debtors 108 76 52 108 76 52 60 76 68 60 76 68 done. Collection from debtors. Yes or no? पेमेंट साइड आता है. पेमेंट साइड परचेजेस है. परचेजेस मीन्स पेमेंट टू क्रेडिटर्स. हाँ, वी आर ट्राइंग टू मीन पेमेंट टू क्रेडिटर्स. Payment to creditors 48 64 80 64 48 80 48 64 80 64 48 80 done. Wages and salary जो मंथ में अक्रू हो रहा है वही मंथ में वी आर पेइंग 9 8 10 10 9 9 9 8 10 10 9 9. ठीक है, फिर आए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 3000 इन अप्रैल 3000 इन जुलाई. Understood? 3000 in April, 3000 in July. Advance tax 5000 in July. ठीक है, so all payments, all receipts done. Yes or no? Can we find the surplus and deficit for each month? So क्या करने का? How to find surplus and deficit? 20,000 plus all the receipts. So when I say 20,000 plus 16,000 plus 1,08,000 टोटल रिसिप्ट 144. उसमें से पेमेंट 48 3 9. Understood? So 84,000 is the surplus cash available. 84. So surplus मैं यहां लिखता हूं surplus या डेफिसिट. So 84,000 is the surplus after making all the payments. But question says you have to keep only 20,000. तो बोलो फर्स्ट मंथ में हाउ मच, वेदर आई विल इन्वेस्ट और वेदर आई विल बोरो. क्या लग रहा है, क्या करूंगा? इन्वेस्ट. हाउ मच आई विल इन्वेस्ट टू ब्रिंग द बैलेंस टू 20,000? Can I say investment? So deficit we will write in bracket, means negative. Investment positive. Borrowings होगा अगर तो negative. Following? How much? 64,000 we will invest. Correct? So 64,000 if we invest, पैसा जाएगा, outflow हो जाएगा, and at the end our balance, closing balance will come to 20,000. Followed everyone? So first में surplus is 64,000 which will be invested. So invested means outflow. So we can write investment in bracket. Outflow means पैसा going out. ठीक है, so 80,000 surplus, उसमें हमने 64 इन्वेस्ट कर दिया. So closing balance, I am just writing over here. Closing balance 20,000 for April. अभी अप्रैल का closing balance will become May का closing opening balance. Yes or no? And can I say every month हम closing 20 रखने वाले हैं, तो opening by default सबका 20 हो जाएगा. Correct? Any doubts? So now let's see how much is surplus for May. So we started the May month with 20,000 plus 12,000 of cash sales received plus 76,000 collection from debtors. Less payment in May is 64,800. 1,64,000 is the surplus. Oh, इतना बड़ा नहीं लिख सकता, गैप नहीं रख सकता. 1,64,000. Yes or no? Everyone getting this?
ये मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? ओ, मैंने ये 64 पेमेंट का प्लस माइनस करने की जगह प्लस किया. 36,000 इज द सरप्लस. 36. I, instead of subtracting 64,000 payment, I by mistakenly added that. So 36,000 is the surplus, correct? 20,000 is the fund that I want to keep. So again, I will invest 16,000. Yes or no? तो मई के एंड तक मेरा इन्वेस्टमेंट देखो 64 प्लस 16 80,000 का हो गया. अप्रैल में मैंने 64,000 की क्या किया इन्वेस्टमेंट, मई में 16,000 का और किया. सो कहने से फ्यूचर में काम आएगा मुझे. जून आई विल स्टार्ट विथ 20,000. The receipts are 20,000 plus 16,000 plus 52,000 less 90,000. So 2,000 is deficit. 2,000 is deficit in June. Huh? And I want positive 20,000. Hey, are you following students? तो कहने से मुझे 22,000 कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉजिटिव 20 होगा. तो 22,000 you have two options, either you borrow or you redeem this investment. ये 80,000 सेल करके आप 22,000 अरेंज कर लो. Followed everyone? Borrowings or redemption of investment. Everyone got this. So 22,000 positive. Followed. So either we will break up our investment which we already have, and or either you borrow. So 22,000 we will arrange. Are you following? Can you see 22,000 liquidation of temporary investment, or you bring the temporary borrowings? Followed everyone? Students, any doubt? Let's calculate for July. 1 lakh minus 64 minus 8 minus 10,000. So can I say 18,000 is the surplus coming for July? Yes or no? And I need fund of 20,000. तो कहने से 2,000 कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा, और either I need to break the investment. So if I break the investment ना, तो can you tell me मेरा investment at the end of July कितना बैलेंस बचा होगा? जुलाई के अंत पे how much investment I would have been holding with me if I'm arranging these funds from breaking the investment. तो कहना है 64 प्लस 60 80,000 इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से 24,000 मैंने ब्रेक कर दिया. फॉलोइंग एवरीवन? So 80,000 minus 24,000. So balance investment still left is 56,000. अगर ये borrowing से अरेंज कर रहे हो तो no question then. So let's do for August. August we started with 20,000 plus 16 plus 76 minus 48 minus 9. 55,000, yes or no? Everyone is getting 55,000 in August. 55,000 in August. I just want to keep 20,000. तो कहना है एक्सेस सरप्लस है जो मैं इन्वेस्ट करूंगा. 35,000 का आई विल मेक फर्दर न्यू इन्वेस्टमेंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So 35,000 further new investment. Last month September, last but not the least, 20,000 से मैंने मंथ की शुरुआत करी थी. प्लस 12,000 प्लस 68,000 माइनस 89,000. So 11,000 ही सरप्लस बचा है. But I have to bring or keep the fund of 20,000. So 9,000 either you break up the investment or either you borrow. Followed? So this is how your cash budget will look like.
ओपनिंग क्लोजिंग सेम, बट इन्वेस्टमेंट में कितना एंड बोरोइंग्स या रिडीम्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितना. So our answer is matching with the solution, everyone. Understood? So balance is 20. Any doubts? Any clarity, students, in cash budgeting? Any question? Simple. So you have to just focus. कब कब पैसा आ रहा है, कब कब पैसे गल्ले से जा रहा है, irrespective of sales, purchase, expense happening. We are just concerned with when it is receiving, when is the payment getting done. Are you following? But simple cash budget. So this was all about cash budget. Now let's just quickly discuss optimum cash balance models. We are running out of time now. So with this background, you can practice other questions at home. Determining optimum cash balance. The firm should maintain optimum level of cash, just enough. That is neither too much nor too little. If ज्यादा cash रखोगे तो can I say you are losing an opportunity of investment? And कम cash, very little cash रखोगे तो you will not be able to settle day-to-day payments. So how much is the just enough cash? How much is the optimum level of cash? For that, we need to learn cash management models given by two scholars, William Baumol and William-Orr. ठीक है? William Baumol model is based on economic order quantity 1952. ये 1992, सॉरी 92 नहीं, क्या बोलते हैं 52 को इन हिंदी, आई डोंट नो, बट इन 1952 दिस मॉडल वाज incorporated, discovered by William Baumol. बट उसने ये मॉडल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए लाया था, इन्वेंट्री के लिए. Are you following? Same model is replicated over here. William Baumol model of cash management. First of all, it is replica of EOQ model learned in material costing. Can I say EOQ was that order quantity where your transaction cost and storage cost was same and minimum? Yes or no? यही देखा था आपने EOQ में. EOQ was that ordering quantity where your storage cost of inventory, स्टोरेज कॉस्ट को हम कैरिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर was lowest and same, yes or no? Was minimum? Correct. So same logic will apply in the cash management model, but instead of cash storage cost or carrying cost, यहाँ पे carrying cost is nothing but opportunity cost. Carrying cost will get substituted with opportunity cost of investment. ठीक है, opportunity cost आएगा. And ordering cost, here we are not ordering cost,
ordering cash, but we will be transacting in cash. So transaction cost आ जाएगा. So cash model given by William Baumol says optimum cash balance is that level of cash where your opportunity cost of investment and transaction cost is minimum. Are you following? Or same. ठीक है. अब ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होता है? तो जस्ट अंडरस्टैंड कि कहने से ज्यादा कैश मैं अपने पास नहीं रखूंगा. आई वुड हैव इन्वेस्टेड समवेयर एल्स. अब मान लो, just in this case, just see the illustration that we did over here above. Can I say this was the optimum cash balance that company wanted to keep? तो surplus deficit का क्या कर रहे थे? Surplus, they were investing somewhere else. They were parking somewhere else. Are you getting this? And deficit होता था तो they were redeeming those investment, correct? तो कहने से ये सब इन्वेस्टमेंट करने का, उसको रिडीम करने का, ये सब के ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं. आर यू गेटिंग दिस? इफ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, if you buy new shares, you will be charged STT, you will be charged GST, you will be charged turnover tax, etc., etc. And even if you sell, redeem those shares that you bought, again ये सब charges आएंगे, brokerage वगैरह. So that is nothing but transaction cost. Are you following? So cash management में ordering cost नहीं होगा, but ordering cost would be in the form of transaction cost. Are you following this? Yes, platform fees सब आ गया. Understood? Now what is opportunity cost of investment? So let's say this deficit, I redeemed my investment. Yes or no? मैंने मेरा investment तोड़ दिया. If the optimum cash balance required is 20,000 and I just have 10,000 in my दुकान का गल्ला, तो can I say I will bring 10,000 either by redeeming my investment? Yes or no? So 10,000 पे अब मैं am losing the opportunity to earn from the short term investment. Yes or no? Or from real estate or from gold. Are you getting this? So that is carrying cost, opportunity cost of cash. Are you getting this? Cash हम store करेंगे, in the cash we will park, we will store in the form of investment. तो वो opportunity now we will lose if we bring the cash to the company. So that is opportunity cost. Understood? Now EOQ की formula आपकी क्या थी? What was the economic order quantity की formula that you had learned in costing? Can I say it was nothing but 2 into annual requirement of inventory into ordering cost per order divided by carrying cost or storage cost. Yes or no? 2AO upon C the whole root था. Correct? यही था. So same, if we are following the same principle under cash management, so can I say so this was optimum order quantity. If you remember, EOQ was nothing but optimum order quantity. So here optimum cash balance, can I say formula would be same? 2 into annual requirement of cash into ordering cost के जगह अब आ जाएगा transaction cost. Are you following this? Transaction cost per transaction. And carrying cost over here is nothing but opportunity cost. Opportunity cost of losing investment, or if you are borrowing, so interest. Are you following? So either you can write O or either you can write I. It is one and the same. So अगर डेफिसिट आप बोरोइंग से ला रहे हो तो इंटरेस्ट आ जाएगा. अगर आप रिडीम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तोड़ के ला रहे हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है? So it is nothing but 2AO upon 280 upon I. This is the formula. Clear everyone? So can you see यहाँ पे UP upon S लिखा है. S is nothing but opportunity cost. ठीक है? Opportunity cost we have denoted by O or I.
T is nothing but fixed cost per transaction. So can I say T is nothing but transaction cost? मैंने उसको T का नाम दिया. Formula is same. Yes or no? Answer will be same. U is nothing but annual cash requirement. मैंने उसको A ही रखा. Understood? So they have just used different alphabets, but they are trying to mean the same. Clear, students? So let's see if there is question on. One question is there. William Baumol, illustration number 10. A firm maintains a separate account for cash disbursement. Total disbursements means total requirement of cash per month is 1,05,000. That is, can I say annually 12,60,000? So can I say A is nothing but annual cash disbursements. Disbursements means cash कितना require है for payment is 12,60,000. Got it, students? Administrative and transaction cost per transfer is rupees 20. Can I say this is nothing but T transaction cost per transfer? Per transfer. ट्रांसफर मींस कैश अकाउंट से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लेके जा रहे हो तो कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से कैश अकाउंट में लेके आ रहे हो तो वापस कितना ट्रांजैक्शन लगेगा. तो पर ट्रांसफर इट इज ₹20. I. Opportunity cost. Market securities yield 8% per annum. Means if I park the money in investment outside, I am earning 8%. So can I say this is nothing but my opportunity cost? इसको I लिख सकते हो. And you can term it as opportunity cost of investment. S भी लिख सकते हो. Can I say it is 8%, which is nothing but 0.08. Calculate the optimum cash balance according to William Baumol. So can I say we have to just simply apply the formula. So as per William Baumol model, optimum cash balance is nothing but 280 upon I, the whole under the root. 2 into 12,60,000 into 20 is the transaction cost per transfer. Divide by 0.08 under the root, which comes to, कितना आ रहा है students? Can you calculate? 25,100. Can I say we can round this 99 rupees to 100? So 25,100 is the optimum cash balance. Means 25,100 is interpreted as at any given point in time. अगर कंपनी अपना कैश बैलेंस 25,100 तक रखती है तो उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी सेम एंड मिनिमम. आर यू फॉलोइंग? This is the idle cash that company should keep at any given point in time. अगर ज्यादा रख रहे हो in the form of cash in your pocket, in your locker, so you are losing an opportunity outside. Following? अगर कम रख रहे हो तो you are losing an opportunity, so you are not able to fulfill your disbursements. Are you following? So this is the idle cash that you should keep at any given point in time in your cash bank account as per William Baumol model. Followed, everyone? At any given point in time. Well, any doubts here? So it is just, in short, if you want to remember William Baumol model, it is just replica of EOQ. Understood? Any doubts, any concerns? आगे बढ़े.
Now, next model is given by Miller-Orr, not William Orr, Miller-Orr. Miller-Orr is trying to find some limitations of William Baumol model. उसका ड्रॉबैक को वो पकड़ रहा है. मिलर और इज सेइंग कि यार हे विलियम, एज पर योर मॉडल कंपनी को एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 25,100 रखना चाहिए. बट यार कंपनीज रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल फ्लक्चुएट ना ओवर अ टाइम. कभी ज्यादा कैश की जरूरत पड़ सकती है, कभी कम कैश, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है नए प्रोजेक्ट में, कभी कम कैश की जरूरत पड़ सकती है. तो 25,100 कांस्टेंट रखना एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इज अ लिटिल इलॉजिकल. दिस इज व्हाट मिलर और इज ट्राइंग टू से. सी विलियम बॉमल सेज कंपनी को कभी भी आप कंपनी का कैश बैंक अकाउंट देखो तो इतना बैलेंस होना चाहिए. बट मिलर और सेज हे विलियम, बी प्रैक्टिकल यार, बी लिटिल प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल. कंपनीज कैश रिक्वायरमेंट इज फ्लक्चुएटिंग. It cannot be stagnant or constant. तो विलियम बॉमल आस्क, तो तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए मिलर और? तो मिलर और सेज कि आइडियली कंपनी शुड फिक्स द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. What Miller-Orr says, Miller-Orr is trying to say company should fix upper limit of cash and lower limit of cash. ठीक है. Now the question arises, how to determine कितना अपर लिमिट रखना है, कितना लोअर लिमिट रखना है. So it depends. The limit is decided by the financial managers or CFOs based on the experience, based on the past trends of the company, based on the stage of company's life cycle. Company growing stage पे है कि maturity stage पे है कि declining stage पे है. Accordingly, based on all such factors, based on कि whether आने वाले साल में मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाली है कंपनी या नहीं, ये सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पास्ट ट्रेंड्स, पास्ट हिस्ट्री, एफएम, सीएफओ का एक्सपीरियंस, सबको कंसीडर करके दिस लिमिट विल बी सेट. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? अंडरस्टूड? Miller-Orr is trying to give his model on practical basis. So let's say based on all these factors, our upper limit set by financial manager is 75,000 and lower limit is set 20,000. So what Miller-Orr is trying to say, Miller-Orr is trying to say कि ये रेंज में जब तक आपका कैश फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तब तक इट इज गुड. बट ये रेंज के बाद इफ इट इज गोइंग ना, इफ इट गोज बियॉन्ड द रेंज, लेट्स से इट गोज ओवर ईयर 75,000 से ऊपर कैश हो गया, तो इन्वेस्ट द सरप्लस. आर यू फॉलोइंग? ये जो बैलेंस है ना, दिस इन्वेस्ट द सरप्लस. आर यू फॉलोइंग? लोअर लिमिट से नीचे जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट को रिडीम करो या बोरो द फंड्स. आर यू फॉलोइंग? सो इन शॉर्ट, Miller and Orr is trying to give you the range of optimum cash balance that company should keep. Range is nothing but upper range, lower range. Hey, everyone getting this? Following? So, इस range के बीच it is fluctuating, no worries. But going above, going below, so you have to now either invest the surplus cash or borrow to bring at the minimum balance. So Miller and Orr approach is a practical model. They are trying to give you a range based on past companies' history, records, trends of cash requirements, based on the life cycle at which currently companies moving on. Growth stage में है तो it will say keep more range of cash because you will need more funds for investment. So according to your experience, according to the past trends, based on the life cycle of the business, decide this upper limit and lower limit.
फिर आपका कैश बैलेंस उसके बीच रखो। आर यू गेटिंग दिस? फॉलोइंग स्टूडेंट, अपर लिमिट से ऊपर जा रहा है, सर्किट है ऊपर की, नहीं चलेगा। इन्वेस्ट द सरप्लस कैश, यू आर नॉट नीडिंग दैट कैश। लोअर लिमिट से नीचे जा रहा है, डूब रहे हो, तो बोरो और आइदर रिडीम द इन्वेस्टमेंट। दिस इज व्हाट मिलर और इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू हिज मॉडल। इस पे कोई इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल थियोरिटिकल पार्ट। ठीक है, so upper limit, lower limit. ठीक है, so this is what Miller and Orr is trying to explain. So with this we complete cash management models, and not just cash management model, we also complete cash and treasury management. ठीक है, rest you can rest theory part, all the theory part you can study at home and practice the questions. Now, moving forward to the last concept of this chapter, in fact, last concept of our sessions. Case study, they can ask theory question, explain Miller-Orr cash management model. They can ask theory for Miller and Orr. ठीक है, now last but not the least, payables management. So I guess we have completed with receivables management. So debtors line item is done. Cash and treasury management. So cash line item of current asset is also done. Inventory line item of current asset, you will cover it in costing. देखो इसमें लिखा हुआ है management of inventory. Just see one pager. Inventory management has been discussed in detail in chapter 2 material costing paper cost and management account. Students are advised to refer the same. ठीक है, so वापस वही सेम चीज पढ़ा के we cannot just unnecessary waste our time. Correct? So inventory management, inventory is also important. Managing inventory, minimum order कितना होना चाहिए, maximum कितना होना चाहिए, economic order कितना होना चाहिए, everything is important. How to deal with obsolete inventory, whether proper storage facility is there or not to store the inventory, ये सब comes under inventory management. But ठीक है, it is briefly covered in cost and costing paper. We are not dealing it in FM. So now let's move to last part, payables management. Payables management, just like managing receivables is important, same way managing your payable is equally important. क्या हमें टाइम पे पैसा भरना चाहिए, क्रेडिट पीरियड जो मिली है उससे भी लेट भरना चाहिए, या क्रेडिट पीरियड जो मिला है सप्लायर से उससे जल्दी पेमेंट करना चाहिए? दिस ऑल फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर एंड एट द एंड वी नीड टू डिसाइड. बट कहने से अगर आपको क्रेडिट पीरियड जो मिला है क्रेडिटर से उससे आप कई लेट पेमेंट कर रहे हो, let's say the credit given by your suppliers to you is 60 days, but you are not paying even on the 100th day, कहने से मार्केट में आपकी इमेज खराब हो जाएगी. Yes or no? Next time say that supplier will not do business with you. So all these factors needs to be considered. All these are significant. Are you getting this? So slow payment by you. हाँ, आपका कैश आउटफ्लो उतना लेट होगा, means you will get some time, more time for payment. Means आपके पास उतने टाइम के लिए कैश रहेगा for investment, but can I say it will hamper your image and your business will be affected, disrupted in future? Yes or no? So managing creditors is equally vital. Are you following?
इस कॉन्सेप्ट में, इस छोटू से चैप्टर में, व्हाट इज आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव? लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज ओनली वन, टू डिसाइड, सिंस इट इज अ मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट का काम मीन्स डिसीजन मेकिंग आएगा, टू डिसाइड, डिसाइड व्हाट, टू डिसाइड whether to avail the discount, whether to avail the discount or not to avail the discount. Okay, what do you mean by whether to avail the discount and not to avail the discount? See, not to avail the discount means you are making the payment on the last day of the credit period. Are you following? Means you are fully utilizing your credit period. So in short, it is nothing but credit period fully availed. This is what not to avail the discount means. Whether to avail the discount means you are paying early. Paying early. So can I say if you make the payment early, you will get some discount from the supplier. Followed? So इसका decision making हमें इस chapter में लेना है. Everyone got this? Yes, penalty for late payment. Late payment करोगे तो पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, बट जनरली नो वन पेज द पेनल्टी इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड. अगर यही ट्रेंड चलता रहा आपका लेट पेमेंट का, तो धीमे धीमे धीरे धीरे हौले हौले आपके साथ वो बिजनेस करना ही बंद कर देगा. एंड मार्केट में ये इमेज स्प्रेड करेगा कि डोंट नेवर डू बिजनेस विद दिस गाय, ही इज नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑन टाइम. सो इमेज भी आपकी खराब होते जाएगी. ठीक है. नाउ हाउ टू डिसाइड whether to avail the discount or not to avail the discount? Let's take directly a practical problem and see how payables management works. So ये सब फॉर्मूला अभी आप मत देखना, it will feel very weird and complicated, but I will explain you through the logic. I will explain this concept entirely through logic and you will get it. So illustration number 17, everyone. A good problem or good illustration to explain how payable management works. ABC Limited has been offered credit terms from its suppliers 2/10 net 45. Hey, have you heard of this term before? 2/10 net 45. ऐसे सब टर्मिनोलॉजीज पहले आपने कहीं पे पढ़ी है, सुनी है, देखी है? नो. लिंगा इज सेइंग नो. नो सर. Oh, okay. Weird, right? Strange, ऐसी terminology. So what does this terminology mean? कि ideal credit period allowed is 45 days. This is the ideal credit period allowed by the supplier. But if you make the payment within 10 days, then you will get 2% discount. Are you following? This is how you read this terminology. Ideal credit period allowed 45 days. If payment made within 10 days, then this is the discounting rate that you will get. A discounting rate means वो कैश फ्लो डिस्काउंट करने वाला रेट या डिस्काउंट कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा. आर यू गेटिंग दिस? डिस्काउंट, दिस इज डिस्काउंट percent, not the discounting rate, discount percent. Are you following? This is how you read such terminology. Followed everyone? Let's say 3/15 net 30 ऐसा होता तो how would you read this? Can I say ideal credit period is 30 days? But if you make the payment within 15 days, 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो, then you will get 3% discount. Followed everyone? This is how you read such terminologies. Okay. 1/10 net 40. How will you read this? The ideal credit period allowed is 40 days.
But if you make the payment within 10 days, then you will get discount of 1%. Followed? Understood how to read this terminology? So can I say in this question I have to decide क्या मैं 45th डे पे पेमेंट करूं वो बेटर रहेगा कि 10वें दिन के अंदर पेमेंट कर दूं और 2% डिस्काउंट लूं? क्या फायदे में है? Which position is lucrative on our company's behalf? Followed? Hence, the company has a choice of paying. Okay, this is 100 per 100. Huh? So, if your purchase amount is 100, you have to fully pay 100 rupees on the 45th day if you are not availing the discount. Are you getting this? So, see, this is the timeline that I am preparing. This is day 0. This is 45th day. So let's say your purchase amount from the supplier is, let's say, 100 rupees. Okay? So if you are availing full credit period, can I say आपको 100 rupees payment करना पड़ेगा at the end of 45th day? Yes or no? But if you are paying within 10 days or on the 10th day itself, कहना है आपको 100 नहीं 2% डिस्काउंट मिलेगा. ₹98 भरना पड़ेगा. Yes or no? ₹2 is the discount. Yes or no? ₹2 is the discount to explain to the layman. Are you following? Actually में ₹2 क्या है पता है? ₹2 is nothing but the ब्याज interest that supplier is charging to you for these 35 days. See, visualize the story. I asked the supplier कि मैं 45th डे पे पैसा देता हूं, सॉरी मैं 10th डे पे पैसा देता हूं तो तू सिर्फ 98 रुपीज मेरे पास ले रहा है, बट वही पैसा मैं 45th डे पे दे रहा हूं, so you are charging 2 rupees more, you are charging 2 rupees extra for these 35 days. ऐसा क्यों? सो इससे सर ब्याज लगेगा ना, मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है 35 दिन के लिए, सो आई एम चार्जिंग इंटरेस्ट फ्रॉम यू, आई एम चार्जिंग ₹2 एज इंटरेस्ट ऑन दिस 98 रुपीज. आर यू फॉलोइंग? ये जो ₹2 एक्सेस ले रहा हूं ना वो ब्याज का ले रहा हूं मैं आपसे. हमारे लिए फॉर लेमन टर्म्स वी से इट इज डिस्काउंट. आर यू फॉलोइंग? बट impliedly it is an interest that he is charging from us for utilizing this 98 rupees more for 35 days. Are you following? अगर 10th डे पे पैसा भरता तो 98 देता, बट वही 98 का 100 हो रहा है, तो कहना है इसे 98 पे ₹2 में ब्याज चढ़ा के दे रहा हूं फॉर यूजिंग इट फॉर 35 days. Are you getting this? Hey, are you following? Are you visualizing what I'm trying to say? So, for easy explanation, we say कि वो discount है, but he is charging implied interest from us. Are you getting this? So, can I say interest in rupees is 2, but can I say interest in percentage? It is nothing but 2/98. Yes or no? Are you getting this? 2/98, and this is for 35 days more. Yes or no? 2/98 का परसेंट करो कितना आ रहा है परसेंटेज? 2/98 in percentage. 2 divided by 98%. So can I say it comes to 2.0408%. Can I say is charging 2.0408% just for 35 days? Can I say this interest I am paying for 35 days? तो annually कितना होगा? 2.0408%. This is for 35 days. तो 365 डेज की बात करें, अगर इसको एनुअली कन्वर्ट करें तो हाउ मच ब्याज क्रेडिटर इज चार्जिंग फ्रॉम मी? कैन आई से इट इज नथिंग बट 2.0408 into 365 divided by 35.
21.28%. Yes or no? 21.28%. Understood this concept. So can I say this is nothing but implied interest rate? Implied interest rate. I am paying to my creditor, paying to supplier, which is 21.28%. Hey, are you following this? Are you following? Let's say मार्केट में से लोन 15% में मिल रही है, तो इज इट वर्थ पेइंग 21.28% टू द क्रेडिटर? बाहर इंटरेस्ट रेट, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 15% चल रहा है, तो इज इट वर्थ पेइंग 21.28% टू द क्रेडिटर? नो। तो उस केस में मैं क्या करूंगा पता है? आई विल टेक द बैंक लोन at 15%. Yeah, are you following? And make the payment on the 10th day itself. Are you following? So that मुझे 21.28% creditor को interest ना देना पड़े. I will pay 15% ना to the bank. वो सस्ता है. Following? So this is how decision making is done. Everyone followed this. Any doubts, any concerns, any clarity that you would like to want? So this is one way of solving. Now other way of solving. This is other way of solving. Let's say ABC Limited can invest the additional cash and can obtain annual return of 25%. And if the invoice amount is 10,000. So now same question with some additional facts. With some additional facts. Additional facts क्या है? Let's say purchase amount. अब purchase amount 100 नहीं, purchase amount हमारा 10,000 है. And our opportunity cost of investment, opportunity cost or opportunity return of investment, ROI, is given as 25%. ठीक है? So whether we should avail the discount or not, इसका analysis करना है. तो let's see. Let's see if we refuse the discount, and another option is if we avail the discount. ठीक है? If we refuse the discount, can I say मुझे पूरा पेमेंट सप्लायर को करना पड़ेगा 10,000? Yes or no? If I refuse the discount of 2%, so can I say payment to supplier under this refuse column will be 10,000? But if I avail the discount, can I say मुझे 10,000 नहीं, 2% discount यानी कि 9,800 ही पेमेंट करना पड़ेगा? बोलो, any doubts still here? Any questions, any queries? Which way of solving any way is correct depending on the facts. What facts are given in the question? Okay? So if we refuse the discount, you will make full payment 10,000. If you avail the discount, आपको 10,000 नहीं, 10th day पे 9,800 pay करना है. But now see the scenario. If I refuse the discount, can I say अब मैं ये 10,000 I can invest somewhere else? Yes or no? For more 35 days? Are you getting this? अब मेरे पास ये 10,000 में 45th डे पे भरने वाला हूं. ठीक है? तो अब मेरे पास और 35 दिन का समय है. 35 days. Are you following? I can invest this somewhere else. I can park this money somewhere else and I can earn 25% on it. Are you getting this? So how much is the
return on investment in rupees for additional 35 days. ठीक है. सो अगर मैं रिफ्यूज करता हूं तो 45 डेज पे पेमेंट करूंगा. अगर मैं डिस्काउंट अवेल करता हूं तो 10th डे पे पेमेंट करूंगा. तो कहने से आई हैव एडिशनल डिफरेंस इज 35 डेज. So I can park it somewhere else and I can earn some return, and that return of interest is given as 25%. Are you getting this? So can I say 10,000 pay 25% for 35 days? Kitna return I can earn in rupees? So 10,000 into 25% into 35 divided by 365. A 239, something around 239. Rounding of error आ रहा है. 239.72, 240. Yes or no? I guess they have taken 360. Yes, they have. So 10,000 into 25% into 35 divided by 365, 239, 240 rupees. ठीक है. So 240 rupees. So can I see a payment? I will do 10,000, but I have सामने earned 240. So how much is my net outflow? How much is my net outflow? Can I say my net outflow? Yes, to 9,800. Correct. Sorry, I didn't mistake. It will be 9,800 because because on 10th day I would be paying 9,800. Yes or no? तो 10th डे पे तो मैं वैसे भी 9,800 भरने ही वाला था. अब ये 9,800 45th डे पे भरूंगा विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000. करेक्ट. So can I say मेरे पास I would invest this 9,800, this 98 rupees for additional 35 days. Getting it? So it would be, sorry, not 240, but it would be 9,800 because that fund I would be having on the 10th day. अगर 10th डे पे मैं पेमेंट करता तो 9,800 का करता, जेब से 9,800 जाता. बट वो 9,800 जेब से 10th डे पे नहीं गया. तो कहने से वो जेब में ही रह गया 9,800. नाउ दिस 9,800 कैन बी इन्वेस्टेड फॉर एडिशनल 35 डेज. Yes or no? So it was 9,800. So 9,800 into 25% into 35 divided by 365. 235 rupees. So this comes to 235 rupees. So my net outflow will be how much? 10,000 minus 235. 10,000 minus 235. 9,765 if I refuse the discount, and it would be how much? 9,800 if I avail the discount. तो फायदा किसमें है? कहने से नेट आउटफ्लो जिसमें कम, that is more beneficial. Yes or no? If I refuse the discount, I can save how much? 9,800 minus 9,765. 35 rupees ka saving I can do if I refuse the discount. Are you following, students? Are you following, everyone? Got it? So it is beneficial for the company to refuse the discount as return on cash retained is more than savings. Okay? So this is one way of solving. So can I say, in other words, can I say, देखो, implied interest rate
was 21.28%. Yes or no? And ROI or opportunity rate of investment for me was 25%. Yes or no? So what this payables management concept is finally trying to say, कि अगर आप बाहर आपका आरओआई ये इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, then refuse the discount na, refuse the discount, earn more and pay interest to the supplier. Are you following? Pay interest to the supplier means last day पे payment करो, refuse the discount means from outside, from parking this fund somewhere else, if your return is more than the implied interest rate charged by supplier, then refuse the discount, avail full credit period. ये फॉलोड. बाहर आप ज्यादा कमा सकते हो तो बाहर ज्यादा कमा के इसको 21.28% भर दो, rather than availing the discount. Are you following this? Everyone clear? So if ROI, so can I say if ROI, that is opportunity cost of investment outside, is greater than implied interest charged by supplier, implied interest paid to supplier, can I say it will always be beneficial to refuse the discount. A refuse the discount means avail full credit period. हाँ, but ये let's say ये 20 या 19%, 20% होता, let's say 15% होता, for example. Can I say by making the payment late or by availing the full credit period, आप बाहर से तो 15% ही कमा रहे हो और उसको 21.28% दे रहे हो. So can I say this is नुकसानी का business, everyone? So in that case you refuse the discount. So if your ROI, if your rate of return from investment somewhere else is less than the implied interest that creditor is charging to you, you refuse the discount. Following, everyone? Understood? Hey, but why will someone make पेमेंट और 2 दिन जल्दी, जबकि आप 8th डे पे पेमेंट करोगे तो भी 2% ही डिस्काउंट मिलेगा? Are you following? So as a rational businessman, they will always try to make the payment on the last day when the discount offer is valid. Yes or no? Are you getting this? तो 10th डे पे ही पेमेंट करेंगे. No one will go on the 5th day, on the 6th day, ये ले तेरा चेक. He will say मैं तुझे 2% ही डिस्काउंट दूंगा. So no one will make payment early. So it is a rational assumption that if you are availing the discount, तो पूरा discounted credit period आप avail करोगे. It is a rational assumption. Followed, everyone? अच्छा सर, हमारा तो 21.28% आ रहा है, यहाँ पे तो 23.5% आ रहा है implied cost. डिफरेंस क्यों आ रहा है? ए डिफरेंस इज वी हैव फॉलोड सिंपल एवरेज मेथड. हमने ये फॉर्मूला यूज करी है, दिस वन, एवरेजिंग ऑन अप्रोक्सीमेट बेसिस कितना इंटरेस्ट आ रहा है. एंड दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूला. बोथ में से कोई भी एक ले सकते हो, इट इज फाइन. हमने जो ये, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड टू कैलकुलेट दिस 21.28. अगर आप फॉर्मूला नंबर 1 देखोगे ना तो यू विल गेट दिस आंसर ओनली. इफ यू अप्लाई, if you see this 21.28%, it is nothing but formula number 1. In short, ये d upon 100 minus d into 365 divided by t. It is nothing but approximate method. This is approx method, approximation method. जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में था ना,
To calculate KD, there was approximation method and there was IRR method. So this is approximation method to calculate implied interest rate. There is one more method called compounding method. Compounding method of implied interest rate. उसमें क्या हो जाएगा? Can I say 98 will be invested for 35 days more. Are you getting this? 98 rupees will be invested for 35 days more at some R, at some rate. Are you getting this? For 35 days of 365. एंड ये 98 का हमें 100 करना है. यहाँ पे 98 100 नहीं, बट यहाँ पे 9800 and 10,000. So future value is 10,000. In short, today's value is 9,800. I will invest 9,800 at some rate for 35 days. Are you getting this? And this 9,800 at what rate of investment for 35 days will become 10,000. So that R you have to find. And if you follow this R compounding rate method, you will get 23.5%. Are you following? Everyone understood? This portion can be solved on Calci. ये portion calculator पे solve हो सकता है. I will explain you now. The time is up, so I will explain you how to solve this portion on calculator itself in revisionary classes now. But क्या करने का? Can I say this is nothing but 1 plus R 35 by 365 is equal to 10,000 divided by 9,800? Yes or no? So 10,000 divided by 9,800. So 1 plus R raised to 35 upon 365 is equal to 1.0204. Yes or no? अब ये 35 डिवाइड बाय 365 करेंगे तो कैन आई से 1 प्लस R 0.0959 is equal to 1.0204. Yes or no? अब ये 0.959 1 प्लस R यहां से मैं निकाल दूं तो यहाँ पे 1.0204 1 डिवाइड बाय 0.0959 हो जाएगा. Are you following? If I remove this power from LHS and if I am bringing it to RHS, so it will be 1 divided by 1 divided by 0.0959. So can I say 1 plus R is equal to 1.0204 raised to 10.4275. ये सबका आया. Everyone got this? Now, how to solve this on Calci? How to solve this directly on Calci? There is a trick. There is a method. And that I will explain you in revisionary class. Okay? Because now the time is up and it will take around 15 minutes more. Okay? But even you can search it. You will get some videos on how to solve this portion 1.0204 raised to power 10.4275 or any number. Okay, so with this we end today's session and I hope management of working capital, a tricky chapter, but you got all the conceptual clarity. I hope it added some values in your life. Students find this chapter little complicated and tricky, but if you focus on the concepts, then it is smooth. Okay? So thank you all for your wonderful time and it was great teaching to you all. So with this, we end today's session. Tech team, we are ending.
Yeah, thank you, Kuldeep. Thank you, everyone.